next question. Next numerical is what? Calculate the de Broglie wavelength. The de Broglie wavelength. So what is the form symbol for wavelength? It's a lambda that you know. And de Broglie wavelength का कुछ suffix देने की जरूरत नहीं है. So you will say only question mark. So lambda we have to find out. Associated with an electron moving with a speed. The speed of the electron is given. Either you can write v. So what is the speed of the electron? 5 into 10 raised to 6 meter per second. You can write c, but c is always represent for what velocity of light. तो हम लोग v को ही represent करेंगे. And उस mass of the electron is given 9.1 into 10 raised to minus 31 kg. So students, as I told or as I discussed in the last lecture, wait, two students are waiting. So let me accept those two students. Okay, I accept. So students, what is the de Broglie wavelength? So students, we know, भले मालूम ना that I know the formula. So we know de Broglie wavelength. What's the formula, students? Lambda is given by what was the lambda? You know, what's the formula? H upon P. आपको मैंने formula लिख के दिया था H upon P, where P was a linear momentum. तो H आपको पता है Planck's constant होता है, P का formula होता है n into V. So students, you know that H का value. What is H का value? 6.63 into 10 raised to minus 34. बरोबर? SI unit. ये याद रखना. So students, let us put the values. So H is what? 6.63 into 10 raised to minus 34. Mass of the electron is given. How much it is? 9.1 into 10 raised to minus 31 multiplied by V. V is also given 5 into 10 raised to 6. Now students, as I told you, whenever you solve such type of numericals, what you have to do? आपको करना क्या है? आपको सोचना है उसके बारे में कि shall I take the power of 10 aside? मैं power of 10 को अलग से लिखना चाहता हूँ. Power of 10 को अलग से मतलब कैसे करेंगे? तो सिर्फ नंबर कौन से दिख रहे हैं? 6.63 दिख रहा है. And in 9.1 and 5 को I can multiply easily. So that what? मैं log work मेरा reduce कर दूंगा. So 5 ones are 5 and 5 nines are 45. So 45.5 is a multiplication of what? 9.1 and 5. अभी now I will think about what? 10 का power. तो students, as I told you, जो डिनोमिनेटर में होते हैं उसका पावर को ऐड करने का, तो -31 प्लस 6 कितना हो जाएगा? विच इज व्हाट? -25. -25 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? +25. एंड -34 प्लस 25 इज व्हाट? 10 रेज टू व्हाट? -9. ओके, तो आपको पता नहीं होगा, वापस मैं एक्सप्लेन करता हूँ. तो पावर्स आर हियर 10 रेज टू -34. ये -31 एंड 6 कितना हुआ? 10 रेज टू कितना? -25. और -25 ऊपर जाके एज यू नो -34 प्लस 25 हो जाएगा. तो व्हाट इज द फाइनल पावर? वी नो दैट. यहाँ से कितना आएगा? 5 और 4 9, तो -9 सिंप्लीफिकेशन आ जाएगा इस पावर का. तो आई सेपरेट इट आउट. तो मेरा टारगेट क्या है? हमेशा नंबर पे ध्यान देना. तो नाउ आदित्य इज रेडी टू गिव मी द आंसर. आदित्य, आई वांट टू फाइंड द log of 6.6. So students, when I say when I want to find out the anti-log, so what I will do? I will do like this. Say anti-log. तो पहले log हम लोग अंदर अंदर फाइंड करेंगे. तो 10 raised to what about 10 raised to -9? उसको बोलेगा भाई तुम लोग बाहर ही रहे. Because I am not going to interfere और खाली फोकट उसको अंदर लेके आओ और then I to find a log of that. You can find out, but मुझे 10 का पावर हमेशा बाजू में रखना है. तो 6.60 पहले पूछने का पॉइंट के पहले how many digits are there? Only one. So 1 minus 1 is what? 0. तो पहले कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने का 0. Okay. अभी आदित्य, tell me the log of 66 में 3. Tell me the log of 66 में 3. Quick. Unmute yourself and tell me the log of 66 में 3. जल्दी. Aditya, are you there? Please tell me the log of 66 में 3. Tell me the log of 66 में 3. इतना टाइम क्यों लग रहा है? 44603. ओके, ठीक है. तो नाउ यू हैव टू से टेल मी द लॉग ऑफ दिस 45 में 5. तो स्टूडेंट 45 पॉइंट के पहले 2 डिजिट है, तो कैरेक्टरिस्टिक इज 1. तो 45 में 5. आदित्य, टेल मी द लॉग ऑफ 45 में 5. जल्दी.
45 में 5 क्विक 2851. You are saying something wrong. I think so. You are not saying log. Will you tell me the log of 66.3 का proper कुछ 87 के आसपास आता है 8215 ओके एंड 45 में 5 कितना आता है 1.65 एक जन बोलो यार प्रॉपर बोलो नहीं 6580 राइट है 6580 okay now just as we know please mute yourself now this is, there is a division तो division के लिए वो हम लोग क्या करेंगे माइनस करेंगे तो 5 minus 0 is 5 I will carry 11 minus 8 is 3 11 minus 5 is what 6 7 minus 6 is 1 and 0 minus 1 is bar 1 so now I have to find out the anti-log तो anti-log करते समय as I told you 10 raised to minus 9 तो पहले का ये पॉइंट के पहले whatever number that is always the power of 10 so since here it is minus 1, bar 1, that's what you have to write 10 raised to minus 1. And whenever you find an anti-log, so you always think the number after decimal. The decimal point के बाद make it जोड़ी, that is what 1, 6 and 3, 5. So please Aditya tell me anti-log of 16 में 3 में 5. Anti-log 16 में 3 में 5. Quick. Anti-log में 16 में 1, 6 में 3 में 5. जल्दी. कितना टाइम क्यों लग रहा है 16 में 3 में 5 आसान 1457 तो हाँ once you write 1457 then 1000 प्लेस के पहले पॉइंट देने का दैट इज द रूल व्हेन यू फाइंड एंटी लॉग ना बिना सोचे समझे 4 डिजिट में से 1000 प्लेस के पहले पॉइंट देने का एंड एज यू नो एज वी ऑब्जर्व -1 -9 इज व्हाट -10 1.457 so this answer is in what meter because wavelength is what length so answer is meter and 10 raised to -10 if I remove so what's the answer here 1.457 angstrom so this is what your final answer of this particular question please all of you copy